this is Mr. Solutionist, and today I came with a very famous book which is How to Talk Anyone. And as you can see on the screen, its author is Leil Lowndes, who has been a psychologist and communication consultant. So I am fully sure which most valuable formulas I extracted for you from this book. That's gonna prove very useful to you. It hasn't been easy to extract this most valuable stuff from this such a lengthy book. Before starting, I would like to describe for whom this book will prove more useful, especially for those who are going to face any kind of interviews. The second is uh, it gonna prove for those two who are introverts and have fear of social gathering. And in most of cases, what happened, if any opposite gender is standing front of them, to that I'm describing about that introverts person, they get confused how to start talk to that person. So without getting late, let's start with formula number 1. And don't worry guys, I know here are my Hindi viewers also, so for them I will tell the same formulas in Hindis too. So as you can see, how to talk anyone. So the formula number 1 is open body language. The first I will describe the whole things in English, later then the same thing I will tell you in Hindi too. So first is open body language. So if you want to approach any person, so we will have to start with open body languages sign. And what are the signs are? The first sign are we can say we can initiate with handshake. We can say namaste in India, and we can say hi, hello. But always remember, you will have to take initiate. Don't wait for the another person's initiative. The second thing which you can do in this open body language formula, you will have to maintain and you will have to maintain. First you have to make eye contact, and then you have to maintain according to the situation. You will have to smile on your face, and then you will easily find that how she or he is approachable. So in हिंदी कि सबसे पहले आपको अपनी बॉडी की जो लैंग्वेज है, आपकी बॉडी की जो तहजीब है, उसको मतलब एक फ्रेंडली मैनर में रखना होगा, एक फ्रेंडली तहजीब में रखना होगा. एंड वह जो फ्रेंडली तहजीब है वह है आप पहले किसी से हाथ मिला सकते हैं, मतलब अपना हाथ आगे पहले बढ़ा सकते हैं हाथ मिलाने के लिए. द सेकेंड थिंग इज़ आप इन आवर इंडियन कल्चर वी कैन स्टार्ट विद नमस्ते. हम पहले नमस्ते करके स्टार्ट कर सकते हैं, हाय बोल के स्टार्ट कर सकते हैं, हेलो बोल के स्टार्ट कर सकते हैं. बट कीप इन योर माइंड वन थिंग, अपने दिमाग में एक चीज़ रखें कि जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट डेफिनेटली बनाएं. अदरवाइज द सामने वाला आदमी पर्सन सोचेगा कि द पर्सन टू हुम विद ही इज़ गेटिंग इंटरेक्टेड, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ही विल फाइंड यू नॉट इंटरेस्टेड. अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाएंगे तो उसे लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो और वो अपने आगे बढ़ जाएगा. सो आपको सबसे पहले हाथ मिला के आई कॉन्टैक्ट भी साथ में होना चाहिए, और आपके चेहरे पे जो स्माइल होना चाहिए. स्माइल यू कैन से कि सामने वाले बंदे को मजबूर कर देगा आपके साथ इंटरेक्शन में आने के लिए, क्योंकि ह्यूमन के लिए स्माइल एक वेरी वेरी बड़ा पॉजिटिव साइन है. एंड उसके बाद आप देखना कैसे वह लड़का हो या फिर लड़की हो कैसे आपसे अप्रोचेबल होती है. सो लेट्स कम टू द सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज इनिशिएट विद ग्रीटिंग. As I already have told you that you can start with any greetings like namaste or hello, hi. And in our Indian culture, for example, I belongs to Haryana, so it's very common to say Ram Ram in Haryana. So you can start with according to your dialects and according to your culture. इसमें मेरे कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले सामने वाले को ग्रीटिंग्स करेंगे, और एज ए इंडियन मोस्टली वी विल एबल टू डू नमस्ते. और अगर सामने वाला आदमी हमारी ही एज का है तो वी वुड लाइक टू से हेलो, हाय. सो एंड कीप इन योर माइंड, स्माइल डू नॉट डिसअपियर फ्रॉम योर फेस. ओके, सो आपके फेस पर स्माइल रहनी चाहिए, जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन का कारण है. सो लेट्स कम टू द थर्ड टॉपिक,
that is ask open-ended questions. It means when you are interaction with anyone, so always ask open-ended questions. Do not ask such a short questions answers are which answers are in very short forms. Like for example, if you ask to anyone, did you do that work and did you watch that movie? It could be also a very elaborative question, but there are many short-term questions also, which answers is only in yes or no. So you should try to avoid such a kind of questions which answers is in yes or no. सो आपको सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए. जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आप जिसके साथ आप इंटरेक्शन में आ रहे हैं, उसका आंसर सिर्फ यस और नो में नहीं होकर उसका आंसर एलेबरेटिव होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि बंदा अपने आप को खोल सके आपके सामने, अपने आप को बता सके. और दिस विल हेल्प यू टू कम इन इंटरेक्शन विद दैट स्पेशल guy or girl. For example, as you can see on screen, what do you enjoy doing in your free time? So what do you think? Will the person who is standing in front of you, will he able to give the answer this question in single yes or no? No ना. So आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए कि उसको खोल के उसका जवाब देना पड़ेगा, और आपकी कम्युनिकेशंस विद दैट पर्सन विल बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड मोर लेंथी. द फोर्थ formula is active listening. So guys, active listening is very, you can say, attractive. For example, if you are speaking and someone is listening you with carefully and attention, so you will find that person attractive, and you will find that is the special person who is listening you carefully, and you will feel like special for that guy. In Hindi, अगर आप किसी के साथ इंटरेक्शन में, तो उसे क्लोज अटेंशन दे कि सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है, और उसके यू कैन से कि उसके जो कमेंट्स है उसमें सर हिलाते रहे, ताकि उसको लगे, और मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट विद दैट गाय और गर्ल, ताकि उसे लगे कि हाँ, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन हिम, और वह आपको और इंटरेस्ट के साथ अपने आप को खोल कर बताएगा. और आप you will find that after such a long conversation you have become very good friends. The fifth formula is find common ground. So what do you have to do, guys? You will have to find out such a common ground which are very common in both of you, so talks become more easy to conversate with each other. So what is that common ground? You will have to find that. For example, you can what is written on screen. For example, look for shared interest or experience to build a connection, what I already have told you. And the second thing, this creates a sense of effort and makes the conversation more enjoyable. For example, if you are in any party and you find when you come in interaction with that guy that he or she is very passionate about the movies, then you can start your talk about movies, and you will find that how interestingly that person is giving answer about your questions, and he will bring the old talks from himself. So आपको एक ऐसा मतलब माध्यम यू कैन से ढूंढना है जिस पे आप दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो. फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को मूवी देखने में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आप पहले ही आप जब स्टार्ट किए 2-4 टॉपिक्स यू कैन स्टार्ट विद हिम कि, एंड यू विल फाइंड मोर एनलाइटिंग हिज आइज व्हेन यू विल स्पीक अबाउट हिज इंटरेस्टेड टॉपिक. सो तो ऐसा टॉपिक ढूंढे. अगर वो मूवी में इंटरेस्टेड होगा तो डेफिनेटली वह इतनी लेंदी और इतनी बड़ी मज़े के साथ तुम्हारी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ द वेरी कॉमन ग्राउंड बिटवीन बोथ ऑफ यू. एंड द सिक्स्थ फॉर्मूला इज बी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक. बी योर सेल्फ. ऑथेंटिसिटी इज की. दिस इज़ वेरी रियल गाइज. if you are come in interaction with anyone, and you are making false appreciations,
तो सामने वाला आदमी जो है वो अपने आप समझ जाएगा दैट यू आर जस्ट मेकिंग फुल ऑफ हिम, आप सिर्फ उसको मक्खन लगा रहे हैं, और ही विल नॉट फाइंड यू इंटरेस्टेड। सो ऐसी सिचुएशन में जो उसकी एक्चुअल खूबियाँ है, जो तुम्हारे सामने वाला बंदा है, सिर्फ उसी बारे में उसकी प्रशंसा करे, ना कि झूठी प्रशंसाएं, ताकि उसे भी लगे कि यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन हिम। और जो आपकी बातें हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं लगनी चाहिए कि जैसे रटी रटाई बातें हैं एंड जो हर आदमी में कॉमन होती है। यू शुड नॉट टॉक सच ए काइंड ऑफ things you should not use to appreciate someone with some such a things. Next formula is avoid interrupting. So what the author tell, let the other person finish speaking before responding. And the second is what the author just want to say ki if anyone is speaking in front of you and don't cut his talk amid the conversation. So first of all just let him finish his speaking, and after then you should give your response according to the talk. And the second thing is interrupting can be perceived as rude and may hinder the flow of the conversation. And if you hinder to anyone at the conversation time, he will find you rude and he will find you that you just say only your talks and you are not interested. And such a kind of behavior shows a arrogance behavior too, because उसे लगेगा कि आप एक थोड़े अपनी बात को डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन हो, अपनी बात को ऊपर रखने वाले पर्सन हो, और दूसरों की बातों में आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। सो आदमी सबसे ज़्यादा यू कैन से उस आदमी को पसंद करता है जो उसकी बातों को सुने, ना कि अपनी बातें सुनाता है। सो यू विल हैव टू बिकम सच ए पर्सन हु कैन लिसन टू अदर्स बिफोर हिमसेल्फ। Okay, so let's start with the next formula, that is use positive body languages. And what are those positive body languages? Maintain good posture. First of all, you have to maintain good posture and nod occasionally to show agreement and use gesture appropriately. I think you have understood what the author want to tell. इसमें author बताता है कि आपको सबसे पहले आपका पोस्चर कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे आप थोड़ा सा अगर आप चेयर पे बैठे तो यू कैन बेंड टुवर्ड्स दैट स्पेशल गाय टू होम विद यू आर इन कॉन्ट्रैक्शन। आप उस बंदे की तरफ थोड़ा सा झुक सकते हैं जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं। आप हाँ में सर हिला सकते हैं बीच बीच में, ताकि उसे लगे हाँ यार ही इज़ इन एक्टिव लिसनिंग। और आपका जेस्चर सीधा होना चाहिए। आप पॉकेट में मतलब पॉकेट में हाथ डाल कर ना खड़े रहे, आप सीधे खड़े रहे, ठीक ढंग से खड़े रहे, फेस पे स्माइल रखे, बीच बीच में सर हिलाए, which I all mean to say. The next is components. Components is like genuine compliments can break the ice and make the other person feel good. However, be sincere and specific in your compliments. For example, if you are in any party and you find something attractive, so you can start to say, "Oh, hello, you are looking very attractive, and especially because of your this band, because of your watch, because of your sandals." And the person to whom you are appreciating for his stuff, he will definitely get attracted to you because you did very genuine compliments. क्योंकि जो आपके सामने आदमी है, आप किसी पार्टी में हैं, तो उसके जो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स है वही करें, ना कि फालतू के कि आप बहुत जैसे कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना। तो ऐसे हम आपकी घड़ी है, आपकी सुंदरता चार चांद लगा रही है, आपके सैंडल्स बहुत अच्छे हैं, कहाँ से खरीदे। सो दिस काइंड ऑफ टॉक्स आइस ब्रेक कर सकती है और वी कैन स्टार्ट कन्वर्सेशन विद दैट गाय। एम्पैथी, द नेक्स्ट वन इज एम्पैथी. Put yourself in the other person's shoes and understand their perspective. What happened in many situations, guys, we don't listen to others and just say only our words. And if anyone is telling something, we just think that he or she is telling lie. But first of in such a situation, what we have to put ourselves in other person's situation and then try to understand his perspective. Show empathy by acknowledging their feelings or experiences. तो all I mean to say कि
किसी भी आदमी को झूठा और उसकी बातों में इंटरेस्ट खत्म करने से पहले पहले उस आदमी की सिचुएशन पर खुद को रख के सोचें, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता तो वाज इट पॉसिबल और नॉट। सो ऐसी चीज़ों में एम्पैथी दिखाए और हाँ वो उसकी बातों में, सामने वाले पर्सन की बातों में सहमति दिखाए। शेयर पर्सनल स्टोरीज when appropriate, share relevant personal stories to make the conversation more relatable. I can tell you this thing in very elaborate way. For example, अगर आप कुछ बातचीत कर रहे हैं, अगर आप यू कैन से आप किसी रेस्टोरेंट के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रहा है, तो आप अपनी अगर ऐसी कोई इसके रिगार्डिंग जब आपने फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाया या कुछ है ना यूनिक चीज़ देखी हो किसी रेस्टोरेंट में, देन यू कैन ऐड योर स्टोरी इन दैट कन्वर्सेशन। तो आप अपनी स्टोरी भी बीच में बता सकते हैं, जिससे बातचीत है जो आपकी वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी और सामने वाला पर्सन फाइंड यू मोर अट्रैक्टिव। बी माइंडफुल ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। फॉर एग्जाम्पल, पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस एंड टोन ऑफ वॉइस। Adjust your approach based on these cues. So author want to tell from this formula कि first of all we will have to observe the facial expressions and tone of voice, what the person who is standing in front of us want to listen. Is he interested or not in our stuffs, in our things, whatever we are telling him. So according to them we should adjust our cues, and these cues are called non-verbal cues. For example, in हिंदी, जैसे कि अगर आप कुछ बात बता रहे हो और सामने वाला पर्सन सिर्फ ऐसे कर रहा है, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर टॉक्स। अगर आप किसी को कुछ बात बता रहे हो, अगर उसके माथे पर सिलवटें आ रही है और वो नज़रों को घुमा रहा है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, देन यू शुड स्टॉप योर टॉक्स according to that specific topic. Be respectful. Respect the other person's opinions even if they differ from your own. Avoid controversial topics that may lead to arguments. This is very useful, guys, and in most of cases, in recent this is happening in very high cases. What happened कि अगर दूसरे के जो विचार हैं हमें क्या है उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वही सब कुछ ठीक है। सो जो सामने हो सकता है वी मे बी रॉन्ग एंड है ना, जो पर्सन हमारे सामने है उसकी बातों को भी एक्नॉलेज करें, और सबके विचार अपने अलग अलग हो सकते हैं, सबकी ज़िंदगी अलग अलग है। सो उसकी रिस्पेक्ट का भी हाँ आप अपने विचार रख सकते हैं, यू कैन पुट यूर व्यूज बट रिस्पेक्ट टू द अदर्स पर्सनस ओपिनियंस टू। और जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, इफ़ यू फाइंड दैट यू आर टेलिंग समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट रूल्स एंड गवर्नमेंट न्यू स्कीम्स एंड द person who is standing in front of you is don't like that specific government and specific party, so don't argument on that specific topic, just leave that topic and talk about something else. क्या होता है जैसे कुछ बंदे बोलेंगे कि और मोस्टली ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के केस में ज़्यादा संभव है। जैसे कोई चीज़ है आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसे कि कोई है बीजेपी को लाइक करता है, वो बीजेपी के काम गिनवाएगा और जो सामने वाला पर्सन है वो उसको आज वक्त बता के कंट्रोवर्सी में पड़ जाएंगे। सो ऐसे सिचुएशन में दूसरे की भावनाओं और ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करना है और ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक से वो अवॉइड करना है। Wrap up naturally. When the conversation naturally winds down, express enjoyment and gratitude for the interaction. Leave the door open for future conversations. So what the author wants to tell through these two lines, अगर आपकी कन्वर्सेशन की धीमी पड़ गई है और आपको लग रहा है कि ये टाइम कन्वर्सेशन को एंड करने का है, ख़त्म करने का है, तो आप एन्जॉयमेंट के साथ इसका आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। आप बोल सकते हैं जैसे नाइस टू मीट यू, नाइस टू टॉक टू यू, आपसे बातें करके मतलब मज़ा आ गया और आपसे आपकी बातें मज़ेदार थी, आई होप कि हम फिर मिले। सो एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसी बातें बोलनी है जो फ्यूचर में कन्वर्सेशन के लिए डोर ओपन रखे। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड
something, any if you are talking about any topics and you both are interested in visiting place to place, so in such a situations आप अगर आप फ्यूचर में दोबारा मिल रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप ये क्वेश्चन ओपन एंडेड ओपन डोर ओपन रख सकते हैं कि हाँ कि नेक्स्ट टाइम आप कहाँ जाने वाले हो, और अगली बार जब आप मिलोगे ही विल टेल यू दैट वेयर डिड ही गो, एंड दिस थिंग keeps your conversations alive forever and your friendship also. So after completing these all things, what the important things you should keep in your mind and how you can become perfect in conversation skills. First of all, remember practicing these skills regularly will help you become more comfortable and skilled in initiating and maintaining conversation with a wide range of people. So basically guys, you will have to be in practice and keep your practice continue, and after continue practicing, after 5 to 6 months later, you will find yourself a different person and you will find that how many new friends you have made. So for more valuable book like this, more valuable content like this, just subscribe my channel and hit the like button for more videos. Okay, namaste, jai Sri Ram, bye bye.